Assalamualaikum everyone. Hope you're all doing well. I am seeing you after a very long time. Let's get right into it. I'm here with the weekly horoscope for the 12 zodiac signs. We will begin with Aries. Aries का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? First card we have over here is Ace of Pentacles. दूसरा कार्ड है The Magician. And the third card is the Three of Cups. ओवरऑल एनर्जी बहुत बेहतरीन नजर आ रही है एरीज वालों के लिए. खुशखबरियां हैं, बहुत रूहानी मदद है, दुनियावी मदद भी है, कामों में मदद आते हुए नजर आ रही है, कोई नया पैगाम आते हुए नजर आ रहा है एंड सेलिब्रेट करते हुए आप लोग इस वीक के एंड पे नजर आ रहे हैं. एरीज वालों को इस हफ्ते पढ़ना है 313 मर्तबा आयत करीमा. टॉरस वालों का आने वाला वीक कैसा होगा? बहुत खुशखबरियां, कोई बड़ा फैसला और कोई दूर की लंबी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं टॉरस वाले. आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, आप लोगों को कोई मैसेजेस मिलने वाले हैं, कोई बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है आप लोगों के माइंड में. और इस हफ्ते का की जो पढ़ाई है आप लोगों के लिए वो है आपने 100 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पानी में दम करके पी है. जेमिनी वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? The first card we have here is the Hermit. The second card is Strength. And the third card is Page of Cups. These are all major arcanas and इससे ये पता लग रहा है, एक तो ये कि आप लोगों ने बातें अपने तक रखनी है, ज़रा अपने दिल की बातें, अंदर की बातें, कोई भी प्लानिंग जो चल रही है वो किसी से शेयर ना करें, नहीं तो मामलात में प्रॉब्लम आ सकती है. अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, सेहत में थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं. वॉक करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने खाने पीने की भी एहतियात करें. और इस हफ्ते का जो अमल है जेमिनी वालों के लिए वो है आयत करीमा 313 मरतबा. कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा लगेगा? द फर्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज द फूल. द सेकंड कार्ड इज द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द थर्ड कार्ड इज द एस ऑफ वॉन्ड्स. ओवरऑल आप लोग थोड़ी सी बेपरवाही की कैफियत के अंदर हैं, और जिस तरह सेकंड कार्ड बता रहा है कि आपके मामलात में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, डाउटफुल हो सकती हैं, चीज़ें ऊपर नीचे होती हुई नज़र आ रही हैं. और लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक आप ध्यान करेंगे, अपने बुजुर्गों से मशवरा करेंगे तो आपके कामों में बेहतरी आ जाएगी. इस हफ्ते का कैंसर वालों के लिए जो अमल है वो है 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें. लियो वालों का आने वाला वीक कैसा होगा? द फर्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज 9 of Wands. The second card is 9 of Pentacles and the third card is King of Wands. Now overall आपके कामों में जो पहले की मसले चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, वो बेहतर होते हुए नजर आ रही हैं, और आप बुजुर्गों से मशवरा भी करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीक के अंदर, और आपके पास पैसे आएंगे, मदद आते हुए ओवरऑल आपके पास जो है वो फील हो रही है. एंड जो रुकावटें थी, परेशानियां थी पहले की, अब आपकी एनर्जी इज गेटिंग क्लियरर एंड इट्स गेटिंग क्लियर्ड. इस हफ्ते की जो लियो वालों के लिए एक अमल है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 313 मरतबा आपने पढ़ना है. वर्गो वालों का आने वाला वीक कैसा होगा? द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स, द सेकंड कार्ड इज द फूल एंड द थर्ड कार्ड इज द वर्ल्ड. एक तो सबसे पहले ये कि आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, एग्रेशन से बिल्कुल भी चीज़ों के साथ डील नहीं करना, जज्बाती नहीं होना, बिकॉज जज्बाती होंगे तो आपके मामलात में प्रॉब्लम्स आएंगी. अगर आपसे कोई रिएक्शन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं इस वीक में, इफ दे आर एग्रीवेटिंग यू, ट्राई टू अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस वीक में. एंड अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करेंगे, आप जज्बाती नहीं होंगे, कामली मैटर्स को डील करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ द वीक योर मैटर्स आर लुकिंग कामर और चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी. इस हफ्ते का आपका जो अमल है वो है आपने 41 टाइम्स आयतुल कुर्सी पानी पे दम करके पीना है. What does the week look like for Libra? The first card we have over here is the 10 of Pentacles. The second card is the 10 of Wands. And the third card is the Page of Swords. Now 10 is a very very evident number over here that we can see. हम बात करें तो आप लोग बुजुर्गों के फैसलों से, बुजुर्गों से एडवाइस लेके इस हफ्ते में चलेंगे, उनसे मशवरा करके चलेंगे. आपके साथ रूहानी मदद मौजूद है, आपके कामों में बहुत मदद आने वाली है. जिन प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं
مالی معاملات کے اندر جو تنگی محسوس کر رہے ہیں وہ سارا کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور آپ اسٹریٹ فارورڈ فیصلے لیتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں. اس ہفتے کی جو لبرا والوں کا عمل ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا 313 مرتبہ. اسکارپیو والوں کا آنے والا ویک کیسا نظر آتا ہے؟ The first card we have is the Empress. The second card is the Eight of Pentacles. And the third card we have is the Eight of Swords. Now overall نظر آتا ہے کہ آپ لوگ کاموں میں مصروف رہیں گے، پیسے آئیں گے، نئے کام آئیں گے اور محنت کرتے ہوئے آپ اس ویک کے اندر نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ کو تھوڑا سا جسمانی دباؤ اور پریشر محسوس ہو سکتا ہے اس ویک کے اندر. اسکارپیو والوں کا اس ہفتے کا جو عمل ہے وہ ہے آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پانی پہ دم کر کے پینا ہے. What does the week look like for Sagittarius? The first card we have here is Judgment. The second card is the Eight of Wands. And the third card we have is the King of Swords. اوورآل آپ لوگوں کی کمیونیکیشن اور رابطے اس ہفتے میں بہت مضبوط رہیں گے. آپ کو کوئی نئی خبر مل سکتی ہے، کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے اور آپ بہت اسموتھلی میٹرز کے ساتھ ڈیل کریں گے. غصے سے پرہیز کرنا ہے، اگریشن نہیں دکھانی ہے اور پریکٹیکلی سوچ کے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے اس ہفتے میں آپ نے. اور اس ہفتے کی جو آپ کی پڑھائی ہے وہ ہے آپ نے 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. کیپریکارن والوں کے اس ہفتے کے کیا معاملات رہیں گے؟ The first card we have is the Hanged Man. The second card is the King of Pentacles. And the third card is the Lovers. آپ کے پیار اور محبت کے معاملات بہت بہترین نظر آ رہے ہیں اس ہفتے کے اندر. کوئی خوشخبریاں ہو سکتی ہیں، آپ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو ہے کنگ آف پینٹیکلس کے تھرو ہمیں یہ شو ہو رہا ہے کہ دے کڈ بی اے نیو بزنس وینچر دیٹ یو کوڈ بی اسٹارٹنگ. کوئی بزنس آئیڈیا، کوئی نئی اپرچونٹی آپ کے سامنے پیش ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے حاسدین کی نظروں سے بچنا ہے کیونکہ حاسدین آپ کے کاموں کے اوپر نظر رکھے بیٹھے ہیں اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس ہفتے کا جو کیپریکارن والوں کے لیے عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. ایکویریس والوں کے اس ہفتے کیا معاملات رہیں گے؟ The first card we have is the Queen of Cups. The second card is the Wheel of Fortune. And the third card is the Eight of Pentacles. آپ لوگوں کی زندگی میں اس ہفتے بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ ویل آف فارچون ایکچولی سگنیفائز there's a big change coming in terms of money, career, prosperity. کوئی پازیٹیو چینج آ رہی ہے آپ کی لائف کے اندر. سوچ بچار کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں، کسی قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے اینڈ آپ کاموں میں بھی مصروف ہیں. اوورآل اٹس گوئنگ ٹو بی اے پروڈکٹیو ویک فار ایکویریس. اور اس ہفتے کا جو عمل ہے آپ لوگوں کے لیے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ایک تسبیح. پائسیز والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا؟ The first card we have is the Chariot. The second card is the Four of Pentacles. And the third card is the Hanged Man. Overall آپ کے اس ہفتے میں تھوڑی سی چیزوں میں پرابلم نظر آ رہی ہے. نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، چیزیں ہوتے ہوتے رک سکتی ہیں. You can feel that there is some sort of stagnant energy. کچھ چیزیں آپ کو فیل ہوگا کہ جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہو پائیں گی کیونکہ نیگیٹیوٹی موجود ہے. لیکن آپ دھیان کریں گے، اپنے بزرگوں سے مشورہ کریں گے تو معاملات میں بہتری آئے گی. اور آپ کا جو اس ہفتے کا عمل ہے پائسیز والوں کا وہ یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے 313 مرتبہ.